अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं ज़फ़र इक़बाल। और आज हम जिस वीडियो प्रिया करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया अचीवमेंट 75 ईयर्स। तो देखते हैं भाई, काफ़ी अच्छी वीडियो है क्योंकि ये भी एक रिकमेंडेड वीडियो है। देखते हैं भाई, सबसे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय के साथ जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। It's the eve of India's 76th birthday. 75 years ago, at midnight, India made a tryst with destiny. An independent India was born. It was drained, divided, but desperate to make it on its own. How has the journey been so far? Tonight, we'll look at India's achievements at 75, the success stories at 75. Hello and welcome to Gravitas Plus. I'm Palki Sharma Upadhyay. There's so much to talk about. It's been a stupendous journey of 75 years. We decided to start with the economy. The British Crown looted $45 trillion from India. From raw materials to the Kohinoor diamond, the British took all. They also exploited all. The thumbs of Indian weavers were cut off. Indian peasants were crushed. The brightest jewel in the British Crown was left with the prospect of a dim future. Britain deindustrialized India. At the time of independence, India's per capita income was 230 rupees. That's $2.89. The average income was 1/15th of what an average American earned. There was poverty, hunger. The task before India was to lift itself, and it did. There was rapid industrialization, 3 successful revolutions, green, white and blue. India opened itself to the world, globalized its economy, privatized its banks. 75 years later, India is one of the world's leading economies. From less than $3, India's per capita income has grown to almost 2,000. Its share in the world GDP is 3.28%. 7 decades back, India was an import-dependent country. Today, more and more global companies are making in India, and Indian companies are making a mark globally. India is becoming a force to reckon with in more ways than one. Which brings us to geopolitics. India successfully navigated the Cold War. It became a political force for decolonization. India liberated Bangladesh. It reached out to Africa, successfully dehyphenated Israel and Palestine, stuck strategic partnerships with the Gulf. India isolated Pakistan. When India and Pakistan had a dogfight, the world supported India. When Pakistan tried to make an issue out of Kashmir, the world again supported India. Today, world powers see India as an important partner, a leading voice in multilateral forums, the face of peace, the loudest cheerleader of counter-terrorism. Of course, the journey has not been easy. Right after independence, India made some bad decisions, like letting go of a Security Council seat. Then there were security challenges. 1948, Pakistan's incursion into Kashmir. 1962, the war with China. 1999, the war in Kargil. The current standoff in Ladakh. But on every such occasion, India showed the world that it's capable of defending itself, capable of resisting any attempt to redraw its map. India has taught the world tolerance, universal acceptance, and none of it was easy. You may recognize this man, Winston Churchill, Britain's former Prime Minister. Churchill had dismissed India's experiment with self-governance. Why? Because India is socially diverse. 22 languages, 20,000 dialects, numerous religions, numerous regions. Churchill said, India is merely a geographical expression. It is no more a single country than the equator. He was convinced that independent India won't be able to stay together. Well, Churchill was wrong. India remains united and grows stronger. Its success as a secular state has surprised many. Of course, there have been ups and downs. India survived a partition, the Babri Masjid demolition, Operation Blue Star. It's what followed, the Gujarat riots. But which country does not have rough patches, and which country can claim to be this diverse? In the initial years post-independence, it was tough keeping the country together. One of the big challenges was public health, or the lack of it. In 1947, the average life expectancy in India was 32 years. There was rampant spread of communicable diseases like malaria and tuberculosis. In 1947, India registered 75 million cases of malaria. Its total population was 330 million. So almost 23% of the population had malaria. By 1964, the numbers came down. Then there was polio. Until early 1990s,
Every day, around 500 children were getting paralyzed. India fought polio and declared itself polio-free by 2014. Today, India's polio eradication is a case study of healthcare success for the world. India also eradicated smallpox, and as we speak, India is running the world's largest vaccination program. India's healthcare system is one of its biggest achievements. We hardly appreciate it because there's a lot that's not right. But when you look at where we started, the achievements look astounding. Around the time of independence, 2,000 mothers died for every 1 lakh childbirths. 2,000. Today that number is down to 103. Also look at the increase in life expectancy. It's over 100%. This is one of the most important indicators of human development. Today, India is called the world's pharmacy. It exports medicines to 200 countries and regions. Another feather in the cap is technology. India decided to go to space just 17 years after independence. It set up INCOSPAR, or Indian National Committee for Space Research. India's first rocket launch happened in 1963 from a town called Thumba. The rocket parts were transported on bicycles and bullock carts. Look at this photo. This is how India's space journey began. Today, India is a well-established space power. It has reached Mars. Today, India is unfurling the tricolour in space to mark 75 years of independence. Do you know India was also the first country outside the permanent UNSC members to test a nuclear bomb? And it did this despite the world's best efforts. Reports say the CIA killed an Indian scientist to roadblock the nuclear journey. The US had even deployed a satellite over India to spy. So work on the nuclear test was mostly done during the night, and equipment would be returned to the original place in the morning to evade detection by American satellites. Code names were used. The thermonuclear device, for example, was placed in a shaft named White House. On the 18th of May 1974, India took the world by surprise. It became a nuclear power. The operation was called Smiling Buddha. The director of India's Nuclear Research Institute, Raja Ramanna, told the then Prime Minister Indira Gandhi, "Buddha has smiled." How did India achieve all of this? 1. Democracy. 2. Literacy. From the very first day of independence, every adult in India had the right to vote. And just for reference, it took the US 150 years of independence to adopt universal adult franchise. In the last 75 years, India's population has grown from 370 million to 1.4 billion. States have been reorganized, but the sanctity of elections has never been compromised. They're chaotic, yes, they're controversial, but they're held without fail every 5 years. Voters queue up in front of booths. Some cast their vote, some vote their caste, but all of them exercise their right. And there have been dark periods. Like the emergency in 1975, then Prime Minister Indira Gandhi was facing protests. Her future in office was uncertain, so she declared a 22-month-long emergency. Democratic institutions were attacked, politicians were locked up, the press was censored. But it did not last. And that's the thing about India's story. It's far from perfect. There's corruption, there's inefficiency, and everything else that we keep complaining about. Yet, India's democracy has delivered. It has alleviated poverty, built world-class infrastructure, and sent Indians to space, to win gold medals and beauty pageants, and to lead the world's biggest companies. Literacy has played an important role here. When India became independent, 4 out of 5 people could not read. The literacy rate was around 12%. For India to grow, it had to educate its people. It made free education a fundamental right. Schemes like Sarv Shiksha Abhiyan and midday meal ensured that children found their way to schools. India expanded its educational infrastructure. In 1947, India had only 28 medical schools, 4 dental colleges, and 33 engineering colleges. Look at the numbers today. The India that could neither read nor write is now the world's biggest talent pool. Top engineers, doctors, Indian origin CEOs all bear testimony to India's growth and transformation. Today's India is home to 1.4 billion people. It is progressive, yet rooted in its culture and values. It is home to the world's youngest population, the world's largest democracy, the world's largest film industry, the world's largest diaspora population, the second largest road network, a leader in climate action, a market that every company wants to enter, and a strategic force that every government wants to partner. Today, as India celebrates its historical achievements, it also has a clear vision of the future. This is India at 75.
हाँ जी गाइस, जैसा कि वीडियो हम देख रहे थे तो उन्होंने 10 मिनट के अंदर जो 75 साल की अचीवमेंट है और 75 साल के जो मसले मसाइल हैं उनको जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो एक्सप्लेन कर दिया, explain छोटे किया। से रखकर। वीडियो इंग्लिश में थी, लेकिन कुछ लोग यही समझते हैं कि इंग्लिश नहीं आती, लेकिन इंग्लिश भी जो है ना वो समझ लेते हैं। बिल्कुल भाई समझते हैं, बोलना बहुत थोड़ा अच्छी सा तरह। मुश्किल भी नहीं है, वो भी बोल लेते हैं, लेकिन वो कोई मसला नहीं है। सोहेल के ऊपर ज़्यादा सवाल उठने हैं, लेकिन सोहेल को इंग्लिश जो है ना वो समझ लेता है। बिल्कुल भाई। अच्छा, वीडियो की तरफ आते दोनों हैं। में से ज्यादा इसको ही आता हाँ है। जी, अच्छी वीडियो की तरफ अचीवमेंट। बढ़ते हैं। बिल्कुल जो है ना वो आप देख लें, पहले भी एक बहुत बड़ा मुल्क था, एक पूरी रियासत थी हिंदुस्तान, बिल्कुल। और एक आप हम पहले भी इसके ऊपर कह चुके हैं कि यहाँ पे जो है ना वो लोगों की बहुत नज़र थी। बड़े बड़े जो है ना लोग, आप हिस्ट्री आगे देख लें कि यहाँ पे आके जो है ना इसके ऊपर जंगें लड़ी गई, बड़े बड़े जो है ना वो आए इसको फतह करने के लिए, लेकिन मुंह की खानी पड़ी। मुँह की खानी पड़ी। फिर गोरे आए, उन्होंने काफ़ी देर यहाँ पे जो है ना वो हुकूमत की, लेकिन जो है ना वो लोगों को गुलाम बनाए रखा। लेकिन शुक्र है कि इनसे जो है ना वो हमारी जान देखा जाए तो इंडिया एक बाद मुल्क है। जब आज़ादी के बाद ना इंडिया को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। पहले भी उन्होंने भाई काफी जंग किया। और एक ना इतने वसाइल है, क्योंकि देखा जाए तो पाकिस्तान इंडिया से काफ़ी तरक्की भी कर रहा था, लेकिन एकदम से पता नहीं क्या हुआ, पाकिस्तान पीछे का पीछे रह गया और इंडिया ने काफ़ी अचीवमेंट कर ली थी हर देखते चीज़ हैं। में। बिल्कुल भाई, हम इस असल में वीडियो कुछ में देख एक रहे दो हैं। चीज़ें हैं वो ठीक है, लेकिन फिर भी जो है ना अगर गोरा यहाँ से निकला है तो वो पाकिस्तान और इंडिया को ऐसे नहीं छोड़ के गया। फिर भी इनको जो है वो आपस में इस तरह उलझा के गया है कि भाई ये सारी ज़िंदगी इसमें उलझे हैं। और मज़े की बात है, आप देख लें अभी भी उलझे हुए हैं। कोई नहीं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो उन्होंने ये लाइनें खींची थी उसकी थी, खासकर जो है ना वो जब कश्मीर का मसला उन्होंने लटकाया, और अभी तक यूएन में जिस तरह कहते हैं कि वो किताबें पता नहीं अब उनके पास हैं भी कि नहीं है। बिल्कुल उन्होंने रिकॉर्ड पे रखी हुई हैं भी नहीं है, लेकिन उनको पता है कि नहीं इनका हल होना। तो मतलब ये कि दो चार चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे छोड़ के गए हुए हैं ऐसी। आपस में लड़ते हाँ, रहे, जिस तरह देख ले कि से भाई एक- लड़ ही रहे हैं हम। हाँ, तो बस एक छोटी छोटी बात पे भाई। हाँ, अगर इकट्ठे होते तो शायद आज हम बाकी मुल्कों का मुकाबला कर रहे थे। बिल्कुल भाई, इकट्ठे होना चाहिए था, लेकिन फिर भी अगर इकट्ठे नहीं हैं तो इस वक्त गवर्नमेंट को कुछ ऐसा स्टेप लेने चाहिए कि भाई हमारे जो ये जो ताल्लुकात ख़राब है ना ये बिल्कुल ठीक हो जाए, लेकिन ये बहुत मुश्किल है भाई। हमें तो नहीं लगता, लेकिन देखा जाए तो सोशल मीडिया पर काफ़ी लोग मतलब कि एक दूसरे को चाहते भी हैं कि एक मुल्क हो जाए, या क्या दुनिया 100 में से भाई 30% होगा, बाकी 70% लड़ कुछ रहे हैं। ऐसा मामला बीच में आ जाता है तो फिर भाई वही एक हालात खराब हो गए और एक दूसरे के वही कान खींचने और बातें करने, ऐसा हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में या अभी या कभी हो ऐसा। नहीं ऐसा तो भाई बहुत लेकिन मुश्किल है, आज होने नहीं ना देना भाई आज किसी आप ने। इस चीज़ को देख लें कि इंडिया ने, या आप उनके प्राइम मिनिस्टर को देख लें, कल ही उन्होंने ऐलान किया है कि हम 25 साल बाद जो है ना वो एक डेवलप कंट्री जो है ना वो शुमार होंगे, या एक डेवलप कंट्री के नाम से जो है ना वो जाने जाएंगे। तो उसका मतलब यही है कि वो 25 साल बाद जो है ना वो यूरोप, आपके सामने यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या जो इस तरह के डेवलप्ड कंट्री हैं उनके मुकाबले में आ जाएगा। ठीक है, और इस आप ये अंदाज़ा लगा लें कि अभी तक जो है ना वो हमारे अगर हम, क्योंकि आजकल जिस तरह हम लोगों में जा रहे हैं उनके रिव्यूज़ देख लें, बहुत सारे हमारे पब्लिक रिएक्शन चैनल बने हुए हैं, लोग जो है ना वो लोगों को कवर कर रहे हैं, तो उसमें आपको अभी तक भी जो है ना वो ये चीज़ें नज़र आएंगी कि जो आप अगर इंडिया के बारे में उनसे सवाल पूछते हैं तो उनको बिल्कुल जो है ना वो नहीं पता, क्योंकि वो एक दो चीज़ों के पीछे लगे हुए हैं और उसी में उन्होंने रहना है। कश्मीर लेकिन आप बेसिक अगर चीज़ें देखें तो इंडिया जो है ना वो अब आपकी सोच है कि कहाँ तक पहुँच गया। अगर 25 साल का टारगेट है उनका, तो मुझे नहीं लगता कि उसको अचीव करने में इतनी मुश्किलात आएंगी। ये सिर्फ 5 से 10 साल हैं, कुछ मामलात हैं ऊँचे आगे पीछे होने वाले, जब वो उनके हाथ में आ जाए तो फिर क्या इन्होंने जो है ना वो आप सोच है कितनी जो है ना आप इसी चीज़ का अंदाज़ा लगा लें कि हमारे यहाँ इधर गाड़ियाँ हैं 25-25 लाख, बल्कि 25 मैं कह रहा हूँ कि 60-60 62 लाख की गाड़ियाँ, और वही जो है ना वो उधर 17 16 लाख या 15 लाख में जो है ना वो सेल हो रही है, जो इधर बहुत 60-75 लाख की जो है ना सेल। और अभी एक जो है ना वो दोस्त बता रहा था
कि वहाँ पे 3-4 कंपनियाँ जो है ना वो वहाँ से अपने यूनिट बंद कर रही हैं। उसकी वजह क्या है कि वहाँ पे उनकी अपनी लोकल प्रोडक्शन गाड़ियों की इस तरह की है कि वो उनका मुकाबले नहीं करते, क्योंकि अगर वो उसके बराबर उस प्राइस के बराबर वो अगर अपनी गाड़ियाँ सेल करते तो उनको कुछ नहीं बचता। लिहाजा वो इस तरह के हमारे जैसे छोटे मुल्कों में उनकी कोशिश है इधर आने की जहाँ पे उनको किसी किस्म का कोई जो है ना वो मुकाबला के लोग ना मिले, हाँ टक्कर के लोग। तो इस लिहाज से वीडियो बहुत अच्छी थी, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया। जिस तरह मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो साइकिल के ऊपर जो है ना वो मिसाइल लेके गए, बिल्कुल जो है ना वो ये एक अच्छी चीज़ थी। बिल्कुल भाई, उस वक्त हालात ही ऐसे थे, लेकिन अब आप देख लें स्पेस में देख लें जो है ना वो इंडिया छाया हुआ है, और जिस तरफ भाई आप किसी भी डिपार्टमेंट में आप बिल्कुल भाई कोई शक नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।